नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू हरिताज कॉन्वर्जेशन। यू नो कि हम लोग बातें कर रहे हैं आज़ादी की, और उसमें शुरू की है ये सीरीज फ्रीडम टॉक। यहाँ पर हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। उसको सिर्फ हासिल ही नहीं की, बट उसको एंजॉय कर रहे हैं ना। अगर आप बात करें भारत की, भारत में जो भारत को देखने की, उसको एब्जॉर्ब करने की, तो हमेशा लोग कहते हैं कि अरे यार, इतना बड़ा देश है, इतनी सारी चीजें हैं, उसका प्लानिंग करने में जमाने निकल जाएंगे। कोई कहेगा कि इतनी डाइवर्सिटी है, उसको समझने में और उसमें बरसों लगेंगे। कोई कहता है उसके कल्चर और फेस्टिवल्स को एडमायर करने के लिए हमें युगों युगों की जरूरत चाहिए। इतना टाइम किसके पास है? तो चलिए आज मैं लाती हूँ कि इतना टाइम किसके पास है, उस कपल को जिसके पास वो टाइम है, जो नॉर्मल ट्रैवलर है। और सिर्फ कपल ही नहीं, बच्चे भी उनके साथ शामिल है। दैट्स द होल फैमिली। इट्स जस्ट एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ इंडिया, absorbing the culture, complexity, craziness, calmness, beauty, landscape. Oh my God. You name it and it's there. Welcome, Santosh and Anshul, to Harita's conversation. Thank you so Thank you, much, Harita. Harita. Thanks a lot. तो ये बताओ कि इंडिया में ये जो क्रेजीनेस है, वो हम सभी इंडियंस में तो होती है। आप दोनों को ये क्रेजीनेस कैसे चढ़ी कि चलो अब सब छोड़ छाड़ कर इस इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं, ये बड़ा सा देश है? क्या कोई वो फ्रीडम फ्रीडम वाला आइडिया आया था, फ्रीडम मोमेंट आई थी, या इंडिया पर प्यार उभर गया था? प्यार बच्चों पे उमड़ा था। बच्चों को आज़ादी दिलानी थी घर के चार दीवारी से। बेसिकली बच्चों को एहसास कराना था कि हम जितनी दुनिया उनको दिखाते हैं उससे कहीं ज़्यादा है दुनिया। हम अगर उनको एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उनकी दुनिया वहीं तक रह जाती है। और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं 20, 22, 24 साल के, तो हम कहते हैं जाओ अब इस दुनिया में अपनी डिसीजंस खुद लो, अपने हिसाब से जीना शुरू कर दो। तो हमने दुनिया तो उनको दिखाई ही नहीं, और फिर हमने बड़े होने का इंतजार किया। बड़े होने के बाद बोल दिया जिंदगी जीना शुरू कर दो। पहले दुनिया दिखाए तो सही। और इंडिया से ज्यादा अच्छी कोई कंट्री नहीं मिलेगी जहाँ पे इतने ज्यादा कल्चर, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतने डिफरेंट वेदर। इतने वेदर तो दुनिया में नहीं होते जितने हमारी कंट्री में होते हैं। सो अगर हम इंडियंस होके अपने बच्चों को इंडिया ही नहीं घुमा पाए, अगर इस जिंदगी में हमने उनको सिर्फ इंडिया का ही एसेंस दिखा दिया, अगर वो समझ गए हमारी डाइवर्सिटी, हमारा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, तो मेरे ख्याल से लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग मिल जाएगी। और फिर पूरी दुनिया है, जब हमसे आगे बढ़ के पूरी दुनिया देख सके वो। बिल्कुल, आपने कहा कि पूरी दुनिया देख सकते हैं। अगर भारत को देख लिया तो दुनिया को समझना शायद बहुत इजी हो जाएगा। इट विल बी वेरी Easy हो easier जाएगा. for the kids. But you said your kids was the inspiration. So you started homeschooling your kids before you took this decision, or it came after that? Because now homeschooling is a normal term because of this COVID. But I'm sure when सब you कर रही है जब started, से it was कोविड not आया that है common. होमस्कूलर्स की। पहले That's होमस्कूलर्स की इतनी इज्जत नहीं थी इंडिया में। जब से कोविड आया सब मजबूर हो गए और सबको लगने लगा चलो चलो ठीक है, बुरी बात नहीं है, हम भी घर आएंगे। बट नहीं, हमने होम स्कूलिंग पहले स्टार्ट करी थी। होम स्कूलिंग की वजह से हमें रोड स्कूलिंग का आइडिया आया था पहले। okay. हाँ, मेरे बच्चे एक हमने एज एन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था काफी रिसर्च के बाद, और 1-1.25 साल के बाद भी रियलाइज किया ये हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है अपने बच्चों के लिए। बट क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टाइम उनके पास बचने लगे थे, वो बहुत चीजें पढ़ने लग गए थे, देखने लग गए थे। एंड तब उन्होंने पूछना शुरू किया कि ना ये कहाँ है, ये देखने जाएंगे क्या, हम लोग ये देखने जाएंगे क्या। एंड वी आर मिडिल क्लास फैमिली, मैं उनको टूरिस्ट जैसा हर दिन वेकेशन पे नहीं लेके जा सकती हूँ। बट एज अ होम स्कूलिंग पेरेंट वी ऑल्सो वॉन्टेड देम टू सी, गो बियॉन्ड। अब मैंने स्कूल से हटा दिया, बुक्स में डाल दिया, वीडियोस में डाला, और चीजें एक्सप्लोर करने में डाला। अब क्या, इसके आगे क्या? अब चार दीवारी से बाहर निकालना था. हाँ, तो so it was a Okay. natural progression from Cool. homeschooling to road schooling. ओके, सो आप रोड पर तो आ गए, रोड स्कूलिंग पर तो आ गए, एंड देन यू नो दिस सॉन्ग सूट्स यू, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, हमें चलते जाना है। सो Literally. यस, सो हु गॉट दिस आइडिया, हमें चलते जाना है, ना घर है ना ठिकाना? हु गॉट दैट आइडिया, एंड सम द अदर पर्सन अग्री टू दैट, और दोनों को एक ही साथ में वो स्ट्राइक हुआ था कि लेट्स डू दिस? See, it's almost एक ही साथ हुआ था, क्योंकि होम स्कूलिंग की जो जर्नी थी 1 ईयर की, वो बहुत इवॉल्विंग थी फॉर अस एज अ पेरेंट्स।
पेरेंट्स, बिकॉज हम लोग को समझ में आया कि बच्चों को अडाप्ट करने में टाइम नहीं लगता. हम एजम्पशंस में रहते हैं कि बच्चे अडाप्ट नहीं कर पाएंगे, जबकि बच्चों ने बहुत इजीली अडेप्ट करे. तो मुझे लगा, हम लोग को लगा कि इससे ज्यादा और उनको हम क्या क्या दे सकते हैं. और इसमें जब हम लोग को ये रियलाइज हुआ कि हम लोग रोड स्कूलिंग भी कर सकते हैं, ऑल्दो इट वाज अ वेरी बोल्ड आइडिया इटसेल्फ, तो फिर ये इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फ्रॉम बोथ आवर साइड्स. मतलब ही हैड अ सेटल्ड आईटी जॉब, और रोड स्कूलिंग का मतलब है इनका तो दिस प्रोफाइल डिड नॉट अलाउ हिम टू वर्क फ्रॉम होम, सो ही हैड टू लीव हिज जॉब. I was into Okay. freelance business, so I had to pick it up to a level कि मैं family sustain कर सकूं. And he Okay. had to take the decision of now looking forward to kids and spending, because homeschooling, road schooling itself is a very disciplined activity. बहुत involvement चाहिए होती है. Okay. So all these were very important decisions. It took time, but हो गया. तो अभी ये नहीं कह सकते कि किसी एक को आया दोनों को फिर साथ में हो गया. ओके. वो तो अगर पहिया चलाना है, अगर गाड़ी चलानी है तो दोनों टायर ठीक नहीं होंगे तो वो सही गाड़ी बात नहीं है, चलने जी, वाली. जी. ओके. सो अब द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि तुम लोगों ने सही में सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, यू डोंट हैव एनीथिंग, लाइक यू आर ऑन द रोड, जहां भी दिशा लेकर चले हम वहां बस चले, गाड़ी या जहां लेंगे, भी बच्चा लेकर चले वहां चले. जहाँ बच्चे लेके जाते हैं वहां बस लेके वहाँ जाते हैं. जाते हैं. बच्चे डिसाइड करते हैं हमें कहाँ जाना है. आज तक की जितनी जगह हम लोग गए हैं, हर जगह बच्चों ने डिसाइड की है. वो हमें पीपीटी बना के देते हैं किसी भी 2 जगह का. व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू बेस्ट प्लेसेस टू सी, व्हाट आर द फूड टू ईट, व्हाट इज द वेदर, क्यों जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए. और उन 2 जगह में से आउट ऑफ दोस 2 हम लोग वो कोई एक जगह चुनते हैं विच इज इकोनॉमिकली वायबल फॉर अस एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी है. But ओके. the recent trip of Ladakh was the only trip that we took them, because Ladakh was like, for us it was a dream. तो हमने रिक्वेस्ट की भाई प्लीज चलो हमारे साथ. एंड हम लोगों ने उनको यही कहा था कि तुम लोग जब वहाँ पहुंचोगे देन यू विल रियलाइज कि हम लोग कहाँ आए हैं. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. वी मेट इनिशियली कि 2-4 दिन काफी डिफिकल्ट थे, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल कम होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस एंड ऑल, हल्का ब्रीदिंग ट्रबल वगैरह सब था. बट उसके बाद दे वर इन लव विद लद्दाख. उसके बाद वी स्टेड देयर फॉर अ मंथ. और मतलब आने में मेरे बेटे ने 4 साल में कभी भी किसी डेस्टिनेशन से निकलते समय रोया नहीं है. मेरा बेटा रो दिया. He didn't want it to come. My daughter didn't want it to come. I know. It's such a beautiful place. कि एक बार, if you are settled, if you are comfortable, you don't want to come back. We talk a lot about the kids, but we forgot to mention the age. They are not that much old kids. They are still young. They are still adapting. They are learning, and it's the world. It's a life for them. So just mention Yes. their age also, so people don't get My confused. son is my son's name is Ridhan. He's 11 years old, and my daughter's name is Koi. She's 6 years old. She'll be completing 7 next month. So not teenage yet. Not teenage yet, entering teenage. My daughter has never seen school, so मतलब बहुत ही Okay. young age. Her son went to the school till 3rd standard, but my daughter never saw school. Kindergarten में गई होगी 1 हफ्ता hardly. 1 year. ओके. आप इंडिया में जब आपने बताया कि योर किड्स प्रिपेयर द पीपीटी एंड you decide which is economically viable, and like internet connectivity, because somebody is working freelancer, you need internet also for the study, for exploring more material and content, you need that. You have been to many places. If we can say, how was your experience? What is the favorite place you come across? What you like about that place so much? Ladakh. Ladakh Okay. is the place. Okay. And it was like we for the first time we stayed in a homestay. So we are if you know about us, we have been traveling with 4 suitcases. Ladakh was the first place we experiment with 1 suitcase. Oh my So God. we kept 3 suitcases at our friend's house, and we took 1 suitcase to Ladakh, and it was an experiment that let's live in 1 suitcase and let's go minimal to minimal, and let's see how it turns out. If it does not turn out well, no problem, we'll switch back to 4 suitcases. And Ladakh turned out to be a completely different learning experience for my kids, for us as parents, for us as a family. We enjoyed living in 1 suitcase. We literally loved it.
and the fact that we don't have to carry a lot of much of the places. My kids met, especially my son, met some of the most amazing travelers, amazing people. Matlab, he learned how to read weather from a merchant navy officer. He, my daughter made friends with Ladakhi army officer. I mean, she learned some kicks and wushu kicks from a national wushu champion, and we met amazing people there. So Okay. my kids learned a lot. Plus the weather, people, Ladakhi cuisine, Ladakhi culture, everything was so new and so different that the entire month flew by. Okay. And so recent favorite has been Ladakh. Before Okay. that, I guess Palampur was one of our favorite destinations. Palampur is a Okay. very small, quaint town in Himachal, but it's a very beautiful place. Nice people. And what was the most challenging place? And what was the challenges you come across? Most challenging place was Okay. Ooty. Yes, not challenge. Yeah, because it was long. We were living in a farmhouse in Ooty Okay. in March 2020, and that was the time when lockdown happened. Okay. So we stayed there for 3 months. No, the place itself was not challenging. The entire because we were living in the farmhouse, and from there to going to the city, don't have a vehicle, and my daughter fell sick, really sick that time. So Okay. it was a little challenging. Plus, my kids for the first time came across, this big spiders. It's a farmhouse. There's a poultry farm, a vegetable Okay. garden. So along with the perks, the insects and the a little less of comfortable bathrooms and these things came across, which was a learning again. But initially it was challenging because my daughter was like what 5, You my son was want 10. So to it was a little too shocking for you them. want to come in the interview? Suddenly, the 10. But that prepared him. After that, Mhm. we in Ladakh, we stayed in one room for a month. Hmm. Literally one room with attached toilet bathroom, and they were Yeah. comfortable. Absolutely comfortable. So it prepared them. Okay. So I think that the journey and the lifestyle you are taking, it allows everybody to accept whatever the situation is there and enjoy that situation Yeah. at the fullest you can, like, whatever it comes up and you can do. I remember when I was a kid, my father loved, like, traveling. So 4 दिन की छुट्टी, if we have, he was working with the bank and my mom was working in a bank. If they get 4 दिन की छुट्टी, they were like, pack the bag, we are going. And we literally packed the bag, and we were on a short vacations, but I have seen India, like you are saying, packed the bag, went and finalized the decisions, went there, slept on the roadside in a car in the decky, because sometimes you don't get the rooms, you suddenly make the decisions, and everything. So I can relate to what you feel about that. So you mentioned about the COVID, and the COVID is not going anywhere. I think when you started your journey as a nomad travelers exploring India, I think COVID parallelly come within short period of time. Therefore, it followed you. 1.5 How years. was your encounter? 1.5 years later, it came to our lives. Okay. COVID, came when we were in UT. So 3 months, the first 3 months of lockdown, we didn't even realize it was like we were anyways living in a village. It hardly had 200 odd houses, so it was Hmm. anyways normal. No. Yes, then it hit it. Then we hit a panic stage, the peak COVID stage, Mm-hmm. and that's when we went to our in-laws place. We have families and they were really worried about us, so we went there. Till October we did not travel, so we went there in June. From June till October we did not travel anywhere, and Okay. then in November we started traveling again, and we went to Rajasthan because the cases were So less in now Rajasthan. So we decided at the end of the day, sorry, at the moment where you are. Goa. Okay. So after Because I need to ask Rajasthan, you. You were in Rajasthan, yeah, so so where are you after now? Rajasthan, we went to Prayagraj, that's Allahabad. From Yeah. Allahabad, we went to Dehradun. From Dehradun, we went to Ladakh. From Ladakh, we have come to Goa. So last week only we came from Ladakh to Goa. Last. Okay.
So, did you face any of the COVID issues, health issues during the COVID? People were saying stop, and even when you went home, the parents were in a panic mode. Like, it's a COVID We, situation. Why do you want to continue your journey? yes, we did a lot of it, but then again we had to make everybody realize that this is not a vacation we took, this was not a tour we took, this is a lifestyle that we have chosen. You cannot stop Hmm. living life because of the challenges, number one. Mhm. Number two, we never got any health issues while traveling. When we were living at my place, we both got COVID. Oh, When we were not oh. moving, we got COVID. So we had to quarantine Oh. ourselves for a while and we had to stay. But then again, travel never really hampered because we have always been, and this is something that I really want to put it out there. We have Hmm. always been very cautious. We have always respected the norms. We have always respected Yep. the hygiene, the social distancing, and we have always traveled with sufficient safety. So if it is not allowed to travel, we have not traveled. Yeah, not only that, Hmm. during the peak times, like when the cases are increasing, wherever we are, we stay there. We don't Yep. travel Okay. during that time. So Hmm. once Hmm. the peak reduces, then we take Hmm. enough precaution and then we travel. Okay. That's the good thing. When you took the decisions, how about the social response, like, to that your decision? फैमिली वालों ने बोला था कि दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का, बच्चों को लेके चल रहे हो. हमें तो इतनी तरीके से इतने गलत अलग अलग तरीकों से पागल बोला गया है ना कि we ended up naming our Insta handle as crazy homeschooling See, family. first when we started, when we planned to homeschool our kids, that was A one kind of a bold decision. bold decision. So our parents, our friends, everyone said कि तुम लोग क्या कर रहे हो? I mean, you're going out of the way. This is not done. फिर वो थोड़ा थोड़ा उनमें सिंक इन होने लगा. फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग घर बार बेच के सब बेच के हम लोग निकल रहे हैं. So it was like तो क्या उनको है, सिर्फ बच्चे हैं साथ में. हाँ, Exactly, exactly. They were not exactly. worried about us. They were worried you're ruining your kids' future. And they were not wrong to an extent because as a society we are conditioned. हम Yes, लोग true. कंडीशन है तो वो उसी कंडीशनिंग से 50 years से आ रहे थे. It took us a lot of time, but it was also we are both parents. We know कि मतलब माँ बाप को कैसा फील होता है जब आप अपने बच्चे के लिए परेशान होते हैं तो. So True. we Yeah. made sure that we went to both our parents and हम लोगों ने उनको समझाया बैठाकर we spent 10 days in both the houses समझाने के लिए कि हम ऐसा कर रहे हैं. There are kids, homeschool kids outside India who are flourishing. Why are we doing it? पहली बात तो ये समझाना पड़ा लोगों को कि एक हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है. आप जनरली कहते हैं ना आप होमस्कूल करें क्या हुआ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक Yeah. सेकेंडली अभी हाँ द बिगर क्वेश्चन वाज कि आप फाइनेंशियली हाउ विल यू डू इट एंड हाउ विल यू सेव, तुम्हारे घर का क्या ऑल दी सेविंग्स फॉर योर किड्स एंड एवरीथिंग. वो एक बैरियर ऐसा था जो मतलब जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल था. बट एट द एंड हम लोग भी उनके बच्चे हैं, फिर वो थक के मान गए. I got the question from one of the viewers कि तुम लोग सेविंग वेविंग तो करते नहीं हो, अगर कुछ इमरजेंसी आ गई, like any of the financial emergency, how will you survive, how will you fight with that situation back? What's your planning, how do you do that? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सेविंग वेविंग तो करते नहीं है? ऐसा आपको क्यों लगता है? हमारे 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर. हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं. हम एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीते हैं ताकि हम थोड़े से पैसे बचा सकें उनके लिए. बट टू बी ऑनेस्ट हमने एक कुछ बहुत एक्सपीरियंस अपने और दूसरों के एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी कि आप लाइफ में किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते. True. अगर आपके बच्चों के लाइफ में जो स्ट्रगल लिखे हैं वो उनको झेलने पड़ेंगे विद और विदाउट योर सेविंग्स और नॉट. तो आप उनको ऐसी एजुकेशन दे दो, ऐसी लर्निंग दे दो, ऐसी व्हाट यू कॉल लाइफ एक्सपीरियंस लोगों के स्किल्स कर दें. आप अपने बच्चे को सबसे अच्छी चीज एज अ सेविंग दे सकते हैं कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग. बाकी उनकी लाइफ में जो लिखा है वो तो उनके साथ होना ही है. बाकी ऐसा नहीं है हम थोड़े थोड़े सेविंग करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम कम कर पाते हैं, हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं, बट ठीक है. हम बच्चे अगर बढ़ना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे तो मैं उनको इतना केपेबल बनाना चाहती हूँ कि वो खुद से अर्न करें और खुद से अपना फंड कर सकें. तो अपनी उस फंड की रिस्पेक्ट उनको हमेशा रहेगी. बिल्कुल. वन मोर क्वेश्चन अबाउट द सेम थिंग कि बच्चों के पास डिग्री नहीं होगी, अगर उनके पास फॉर्मल क्वालिफिकेशंस नहीं होगी,
And future में जब वो बड़े हो जाएंगे, like they grow up, they'll start their family, how will they adjust in the one house life and not the nomad life? These are बहुत two अच्छा questions क्वेश्चन है। combined by ऐसा one of नहीं है, the. ऐसा नहीं है, ये एक गलत फहमी है। आप जब भी कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हैं तो यू नीड 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट। मेरे बच्चे 10th और 12th का एग्जाम देंगे, दे विल हैव दैट सर्टिफिकेट टुमारो। इफ दे वांट टू गो मेन स्ट्रीम, दे वांट टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट रहेगा। होम स्कूलिंग इज नॉट अनस्कूलिंग। बच्चों को नहीं पढ़ाना है इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बस हम लोग बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं, रेगुलर पढ़ा रहे हैं, खुद प्रिपेयर कराते हैं वो खुद अपने आप पढ़ते हैं, 10th 12th वो भी देंगे। इनफैक्ट वो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का बुक्स पढ़ते हैं। ये मैं जरूर बताना चाहती हूँ। 1 साल का टाइम उनको देते हैं हम एक क्लास पूरा करने के लिए। एक क्लास के फर्स्ट 6 मंथ्स वो सीबीएसई बुक्स से पढ़ते हैं, एक और अगले 6 मंथ्स वो आईसीएसई से पढ़ते हैं ताकि उनका रिवीजन भी हो सके। और क्योंकि उनको कोई प्रेशर नहीं है टेस्ट का, कोई मतलब एग्जामिनेशन का प्रेशर नहीं है, तो वो पढ़ते हैं। बस यही फर्क है। And how they will cope up in future when they have to live in a one, like a stable life rather than like roaming here. Why would they not? अगर वो जमीन पे सो सकते हैं तो वो बेड पे तो सो ही सकते हैं, और अगर उनको बेड पे सोना है तो वो जमीन पे भी सो सकते हैं। See, हम लोगों का जो बचपन था वो सो कॉल्ड स्टेबल लाइफ था, जिसमें हम लोग एक ही जगह पे लाइफ जी रहे हैं। तो अगर एक्सपीरियंस दे दिया तो वो स्थिर होने का एक्सपीरियंस तो ऐश से जिएंगे। अगर वो चाहते हैं कोई चीज जो उनको खुशी देती है वो करने में उनको क्यों प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल। स्टेबल लाइफ से खुशी देती है तो उनको जरूर। ऑल्सो हम अपने बच्चों को पर कोई फोर्स नहीं करते हैं। मेरा बेटा इज ग्रोन अप इनफ टू अंडरस्टैंड कि फैमिली के रिलेटिव्स वगैरह किस कंफर्ट में रहते हैं। मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ, आपको जब भी स्कूल जाना हो, आपको स्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए हो, आप सिर्फ एक बार बोलो, हम रुक जाएंगे और हम वैसे ही लाइफस्टाइल आपको वापस दे देंगे। बिल्कुल, they know that we are open with that. Yes. And मतलब हम लोगों ने कोई भी डिसीजन जो है अपने बच्चों पर थोपा नहीं। जो डिसाइड किया था, मेरी बेटी छोटी थी बट मेरे बेटे के साथ हम लोगों ने ये साथ में मिलकर डिसाइड किया था। So this decision is a mutual decision, not something that we have forced on our kids. Also, that's so good. जो कई लोग ये सोचते हैं कि हम एक कमरे में रहते हैं, हम बिल्कुल कभी हम एक कमरे में भी रहते हैं। वैसे हम लद्दाख में एक कमरे में पूरे महीने रहे थे, लेकिन हम जहाँ हम अफोर्ड कर पाते हैं वहाँ हम अच्छे से 1 BHK में भी ले लेते हैं बच्चों को, एक कंफर्टेबल फर्निश जगह भी देते हैं। और कभी अगर मेरे बच्चों को मन करता है तो मैं उनको रिजॉर्ट्स में भी लेके चली जाती हूँ। हम वी डोंट वांट टू डिप्राइव देम फ्रॉम एनीथिंग, वी वांट टू शो देम एंटायर स्फीयर ऑफ लाइफ। Yes, बिल्कुल। So, but true. Yes, ऐसा नहीं है कि they have not seen a luxurious lifestyle. They have seen it, but they don't live it. And when if I make them live a luxurious lifestyle for more than 5-10 days in continuation, believe me, my son says, Exactly. let's get back. This is not. So he says this is not an explorer's life that we are living. ये उसके words होते हैं. So let us start traveling. Yes, that's a good thing to know. I saw you are very active on Instagram and some of the cool pictures and the videos are there. What's the difference between the reality and the Instagram thing? There is no difference, honestly, because Instagram, what we have put up is not even 5% of what we do. Because of him, I'm a digital marketer. My bread and butter is social media and digital media, but he is not so, and he's very, very tightly knit about his family. He does not allow me to post the actual pictures, the actual photos that we do, the actual videos that we have. He does not allow us. I only get to post very, very few things that I record and I show him. He's okay with it. He's not very comfortable with. That is one of the reasons we have been offered so many times where you open a YouTube channel and all. So we're like, he's like, I don't want my kids to live for the camera. I don't want them to fake it for the camera. Let them live their life. There'll come a time when they want to do it, let them do it, but that should be their decision, not influenced by anything that is coming and likes or follows. So this is me who does it. So what is on Insta is not even 5% of what we actually do. Okay, so what's the future plan? Let the kids, because they enjoy their life, we know what you want to do in the future.
There's a very funny story. Complete the India or We met a very dear friend in Ladakh, and he always has this one line: "I don't have a pla." So I really want to quote him right now that yes, we don't have a plan at all. If we had a plan, we would not be doing this. I don't know which next destination my kids are going to choose. So I don't even know where am I going to be the next month. So how can I say we about don't know how long we are going to travel. Till the Yes. time our kids say we want to travel, we are traveling. The day they will say that let us stop at one place, we will stop. So we oh, don't have any plan as such. We are doing this for the kids. So the day our kids say that let us stop traveling, now we want to get settled in one place, we'll get settled in one place. Not a problem. Nobody okay, so knew that's COVID was going to come. It still came, right? So plans बना के भी क्या ही करेंगे? that's true. The COVID has taught us everybody that whatever you plan, it's not gonna work against the nature's wish, or whatever is gonna happen is True. gonna happen. So it's really good, and it's lovely talking to you. Before we end, the last comment on the freedom talk. What is the freedom? How do you define the freedom? Freedom for us is the freedom to choose the way you want to study, the way you want to explore, the way you want to live. We are very simple people. As a parent, I want my son to have the ability to decide what he wants to study, how much of it he wants to study, and for how long he wants to study, how he wants to study. If he's humming a song and he's listening to to music while studying, it's not bad. It's his way True. of studying. So the freedom to be able to take decisions, be yourself even as a kid, that True. is freedom for me. True. Anything Any else more you to want to add, add? Santosh? No, that's it. No. That's it. So I think this is the really good, simple, and celebrative way of freedom. That freedom to do whatever you like, freedom to learn the way you like, and freedom to express the way you like. And I wish you happy Independence Day a little bit early Thank in you. Same advance. to you. Same Same to to you. you. Same to you. Thank you so very much. And we'll keep talking on different topics on homeschooling, road schooling in the future as and when the time permits. But thank you so much for joining, and wish you all the best, wish you all the happiness, and you have more and more fun in your journey. Thank you, Thank you so Harita. much, Thanks a Harita. It lot. was lovely speaking to you. Thank you so much for Same calling here. us here.